Hello students, welcome. So we have completed our optics part. So in this class I will discuss some numerical questions. Okay. So play तमने जहाँ numerical play ध्यान दे कि देखिबो and तमन notes numerical जगह नीचे चढ़ाई दबो. Okay. So that it will be helpful for you in your future. So सही सार first question, that is question number 1 is refractive index. मु बोले शॉर्टर लिखछि त माने क्वेश्चन लिखला वाला पूरा लिखिबो of a glass is 1.5. okay, what is velocity of light? What is the velocity of light? What is the velocity of light in it? okay, आहिर velocity of light केते आसीबो सेटा आमे काढिबा हमको काढिया पड़िबो. So you are given only glass रा refractive index तमान को दिखाई. So you have to find out what is the velocity of light inside it. So first of all तमान को आगु सिखाई पिले केमिति कोन करा जाय. Solution, in your solution what is given, you have to write down what is given. Given refractive index of glass is equal to 1.5. okay, so refractive index of glass mu of g पिले लिखिबा. okay, and जेतु केवल refractive index को आइ पिले मेंशन करा है. so definitely this is refractive index of glass. okay, with respect to the air, or you can also say this is the refractive index in terms of absolute refractive index. Absolute refractive index of the glass. okay, this is 1.5 and we have to find out velocity of light in it. So to find velocity of light in glass, suppose this is equal to v. Hala, I have considered the velocity of light is v. Hala, therefore we know that the formula for refractive index in terms of velocity, okay, this should be equal to velocity of light divided by velocity of the light inside the glass. okay, inside the glass I have considered glass, where C equal to velocity of light. C टा कौन प्ले velocity of light. So therefore substituting values, mu of g is the refractive index of the glass. So 1.5 is equal to C is the velocity of light, and velocity of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So divided by, I am writing in SI units, so meter per second I have said. So this is divided by v. This implies v is equal to 3 into 10 to the power 8 divided by 1.5. okay, v पड़े पड़े आसिला 1.5 साइड रे डिवाइड हे गला. so 1.5 into 2 is the 3. so this is equal to 2 into 10 to the power 8 meter per second. okay, so therefore velocity of light in the glass, we can write velocity of light in the given glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. okay, 2 into 10 to the power 8 meter per second. okay play. so next question हम देखिए पिले. question number 2. question number 2 is that, suppose given the wavelength of the
wavelength of a monochromatic light in a liquid of refractive index 1.4 is 400 nanometer. Okay, calculate wavelength of this light in a glass of refractive index 1.6. Okay, this is the question you are given. So in your question it is asked that, okay, what is the wavelength of light in a glass and given refractive index is 1.6. So in this context we have to find out first what is given in your solution. Given wavelength of the light is given as 400 nanometer. Suppose wavelength of the light, suppose lambda 1. Okay, suppose lambda 1 is equal to in the given liquid is equal to 400 nanometer. So you have to find out this in meter. Okay, so nano, value of nano is 10 to the power minus 9 meter. Okay, or you can write this is equal to 4 into 10 to the power minus 7 meter. Hala, re 400 अच्छी तक solve कर दले कौन गला प्ले 10 to the power minus 7 meter. Next, given mu 1, okay, refractive index inside the liquid is equal to, and you have to write this, okay, so is equal to 1.4. Calculate the wavelength of light in the glass of refractive index 1.6. Okay, so refractive index, second refractive index is given 1.6 in the glass, or you can write this is the liquid. Suppose this is the glass and this is the liquid, and you have to find lambda of G inside glass equal to how much. Okay, so केते पिला आसीबो सेटा काढिया पड़ियो तुमको हला wavelength liquid रे दिया छै एति की wavelength हमर सॉरी पिले refractive index दिस liquid inside liquid हो 1.6 सॉरी 1.4 and glass रे refractive index हला 1.6 ताल तार wavelength ता केते आसीबो. So सही हिसाब रे पिले हम जे देखिबा we can write that हला refractive index of glass with respect to कोन हमर liquid, refractive index of glass with respect to liquid should be equal to केते ना lambda of पिले केते से कथा तमरो L divided by lambda of G. That means wavelength of light in liquid divided by wavelength of light in glass. Okay, so therefore this implies mu L by G दिहाइछि. So with respect to जतले air दिहाइछि, that means एठी जेतु किछि लेखा हैनी पहिले मेंशन करा हैनी, एटा with respect to कोन definitely with respect to air ही दिहाइछि. So this implies L by G हिसाब से देखियो this is equal to mu of G by mu of L is equal to lambda L divided by lambda G. Lambda L divided by कोन आसीबो lambda G आसीबो. So lambda G को पहिले हम काढिबा पड़िबा हम कोन कैलकुलेशन करिया छै lambda G. So lambda G is equal to mu of L divided by mu of G into lambda of L. Okay, so देखो एटा वेब साइड पळा आइसला, एटा एपड पळेला, एपड पळेला कोन हला mu of L टा एपड मल्टीप्लाई हे गला, mu of G टा एपडे डिवाइड हे गला. Okay, डिवाइड हे गला पहिले केते हिसला lambda G is equal to lambda mu of L by mu of G into lambda of L. So substituting the values we can have that lambda of G is equal to mu of L टा केते पहिले 1.4 divided by केते हला mu of G is 1.6 into mu of L is केते दिया छी 4 into 10 to the power केते -7. 4 into 10 to the power minus केते
7 so this is equal to एटा लिखि परिबा 14/16 into 4 into 10 to the power -7 ओके मु एटा 10 एपट सेला 10 कोन हे गेला 14 कर डिवाइड हे जिवो एपट 16 कर 10 मल्टीप्लाई हे जिवो जेटा कैंसिल हे गेला सो 14/16 आसिला हला 4 into 4 is 14 4 into 4 is 14 so this implies lambda of g is equal to 4 से एटा डिवाइड करबा हला 3 हला 3 चौ 12 आसला पॉइंट दे देले एटा 5 आसला 3.5 आस हला पॉइंट दे देले एपट करते आसीबो तमरो हला 20 आसीबो 20 आसले हला 4 5 जा 20 3.5 into 10 to the power -7 okay lambda of g is the meter okay this is the kono wavelength of the light inside the glass एटा कोन हिसला प्ले wavelength of the light inside the glass भितर wavelength रा एतिकी रहइबो ओके प्ले सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा Question number 3 an object is placed at a distance of 1.5 meter at a distance of 1.5 meter from a screen okay a convex lens placed in between casts an image on the screen 2 times magnified find focal length of the lens find focal length of the lens okay so question first बुझो पले गोटे ऑब्जेक्ट को पले केते डिस्टेंस रखाई छी स्क्रीन रू 1.5 मीटर डिस्टेंस रखाई छी मझरे कोन कराई छी ना पले गोटे कन्वेक्स लेंस रखाई छी एंड इमेज जोटा प्रोड्यूस हला दैट इमेज इज एक्चुअली 2 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज टा केते मैग्निफिकेशन केते 2 ओके हला हले जदि हम डायग्रामेटिकली जदि आपको बुझा ट्राई करिया सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट ओके हियर इज द लेंस हियर इज द स्क्रीन okay the image produced is 2 times this image produced is 2 times and this is suppose u this is the v and total distance is between object and the screen is 1.5 meter okay that means u plus v is equal to 1.5 meter कहीं ना screen रे ही हमर image टा produce हो so given what is given u plus v is equal to 1.5 meter ना नहीं ओके तुम जानी पड़थबो जो u plus v is equal to केते दिया छै 1.5 meter and m is equal to केते 2 magnification produced is given as 2 okay so we know that we have to find the कोन काढियार अछि focal length okay to find f is equal to how much एफ जदि काढ़ार अच्छी से डेफिनेटली यू आ वी काढ़ले आम लेंस फर्मूला पकई देकिना आम कौन करिपरिबा ना आमर है लेंस फर्मूला पकईकिना आम एफ रो वैल्यू काढ़ दे परिबा सो आम कौन करिया ना एई जो दुईटा रिलेशन अच्छी आहिरो आम यू आ वी रो वैल्यू काढ़ा को चेष्टा करबा दैट इज वी नो दैट मैग्निफिकेशन गिवन वी नो दैट एम इज इक्वल टू प्ले वी बाय यू फॉर ए लेंस है मिरर केस रे प्ले वी बाय यू लेंस केस रे केते आसीबो v by u जदि v इसला दिस इज इक्वल टू 2 सो दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू 2u v इज इक्वल टू केते 2u आसीला
So therefore we can write u plus v जगह 2u पकेबा, this is equal to 1.5. This implies 3u is equal to 1.5. This implies u is equal to 1.5 by 3. So this is equal to 1 by 2. This is equal to केते 1 by 2 मीटर. यूटा केते आसले पिले 1 by 2 मीटर आसला. जदि यूटा पिले 1 by 2 मीटर आसला, that means 1 by 2 is 0.5 मीटर आसला. So v is equal to केते से v is equal to पिले 1.5 minus केते v is equal to 1.5 minus केते आसे तमरो v is equal to हला एडा minus u हे जीवो 0.5. This is equal to 1 meter. v is equal to केते आसला 1 meter. Next पिले using length formula जदि यूज करिबा पिले तमरो हला 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. So this implies 1 by f is equal to 1 by v केते सला 1 minus 1 by u. देखो 1 by केते आसीबो u आसीबो ले u केस रे पिले हमको ये साइन कन्वेंशन यूज करिया बेले जेतो लेफ्ट हैंड साइड रे अछि पिले सेटा माइनस आइबो. सो एटा केते अछि 0.5 अछि, सेटा माइनस ऑफ केते अछि हमरो 1 by 0.5 minus of 1 by 0.5. So this is equal to केते हि गला रिप्ले तमरो एटा 1 plus एटा 0.5 अछि 1 by 1 by 2 0.1 by एटा केते आसीबो 2 आसीबो. So this is equal to 3 meter. ओके तमाने निजे कैलकुलेशन को माइनस माइनस प्लस आइ गला 0.1 by 0.5 is 2. So 1 plus 2 is 3 meter. So focal length is केते आसिला पिले 2 meter आसिला. Okay, so if the focal length is 3 meter, then कोन magnification produced is 2 times. एडी कोन आसिला magnification produced केते आसिला 2 times आसिला. Okay, so next question को जीवा पिले question number 4. Next question is hala tamara prism re question hala a ray of light passing through a glass prism of angle 60 degree. Okay, given 60 degree undergoes minimum deviation of 30 degree. Okay, calculate refractive index of the material of prism prism material रो पिले हम कोन काढिबा ना refractive index काढिबा. Okay, so you are given कौन गिवन अच्छी पिले सॉल्यूशन कला को हम कौन करिया पड़ो अगेन हला हला सब बेले पिले मन रख जेते बेले भी न्यूमेरिकल करूछ कौन दिया जे काढी दउछ पिले तमन को हला इजी हे जो पिले सब बेले कैलकुलेशंस करिया पई. तो सही हिसाब रे यू आर गिवन कौन अच्छी पिले देखि दबा गिवन एंगल ऑफ प्रिज्म इज a इज इक्वल टू केते प्लस 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दैट इज d ऑफ m इज इक्वल टू केते दिया छि 30 डिग्री एंड टू फाइंड refractive index of the material of the prism. Okay, refractive index, and we know that refractive index mu is equal to sine of a plus d of m by 2 whole divided by sine a by 2. So this is equal to play सब जगह substitute कर दले value sine a is 60 plus d of m is 30 divided by 2 whole divided by sine 60 by 2. Okay, so this is equal to pile kete gala sine
है 60 + 30 इज 90, 90/2 इज 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 30 डिग्री। ओके, sin 45 इज 1/√2 डिवाइडेड बाय sin 30 डिग्री इज 1/2। sin 30 डिग्री के वैल्यू 1/2, सो दिस इज इक्वल टू 2/√2, दिस इज इक्वल टू √2। सो √2 रो वैल्यू केते पिले 1.414, 1.414। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास प्रिज्म इज 1.414 आसिला। ओके पिले, सो यही हिसाब रे कोन करियो ना पिले ए टाइप रो तमरो हला न्यूमेरिकल्स जाय करिवो हला। नेक्स्ट क्लास रे आउ केतार न्यूमेरिकल्स करिया मु एति लिखि राणी थिले पिले आज हला तमान को बुझाय पय आज रो क्वेश्चन जाव बेसी हला वेरी इजी क्वेश्चन जाव थिला नै के आस्तले समस्त प्रैक्टिस करियो पिले एई टाइप रो क्वेश्चन ही तमरो एग्जामिनेशन रे आसुची। सो एई फार्मूला ऊपर डिपेंड करि केना जेतो आसुची एग्जैक्ट ए क्वेश्चन आसला मध्ये जो फार्मूला जाको मु यूज कली पिले एई फार्मूला जाको ही प्रायतः पढ़ी थाउची एग्जामिनेशन रे। ओके, सो जेहेतु कोर्स कंप्लीट हला परे करूची पिले काहे करूची तमन कहि दउची जे पिले देखो तमरो सब जाक कॉन्सेप्ट जानला पर ही आम न्यूमेरिकल करि परिबा। जे जते न्यूमेरिकल करि परिबो तार से अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर हबो, जानि परछ। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हबाटा निहाती दरकार। सो समस्ते भल भाव देखियो पढ़िबो हला, सब जाक करिवो हला, पाठ सब जाक टेक्स्ट कंप्लीट कला पर ही न्यूमेरिकल भीतर को आसीबो। ओके, एंड न्यूमेरिकल कला ऊपर अटमोस्ट केयर रखिबो, सब जाक एसआई यूनिट रे रहइबो, यूनिट जाक देखुथिबो हला। अगेन कहि रखुची यूनिट जाक तुम मैंने लक्ष्य करूँ जे कौन कौन रहा सब जाक गोटे यूनिट रे कन्वर्ट है ना नहीं। ओके, कौन दिखाई कौन काढ़ार अच्छी कौ फर्मूला पकड़े बाहर से सब ख्याल रखार अच्छी। ओके, ताहले ही तुम न्यूमेरिकल्स जाक करवाटा पॉसिबल हो पार। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड टू गेट द वीडियो फास्ट एंड immediately after uploading the video you can subscribe this channel so that you will directly get this video. Okay, so thank you.